countries and communities better. So this was my presentation. Thank you very much for your time. Sorry for all the technical glitch and Zoom disconnecting, but thank you. Just great. Amitabh ji, kindly continue the question answers now. Please let me know if you have any questions. Otherwise, I'll be delighted to hear Dilip here. I find there is some silence, persisting silence. तो मैं शुरू करूं, कुछ बातें बढ़ाऊं? Yes. Yes, Papa. Waiting for it. मेरा ये इंडियन अमेरिकन्स की पॉपुलेशन तो बहुत मामूली है, बहुत कम ही है, लेकिन इनका प्रभाव काफी बड़ा है। ज्यादा गर्मी करता होगा। आपके बातों से ये मालूम होता है कि हम इंडियन अमेरिकन्स पॉपुलेशन में जो लोग कुछ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कुछ मायने में राजनीति में भी कमला है, राजनीति के क्षेत्र में भी उन्हीं मामूली माइनॉरिटी के लोग में ही कुछ ही लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया है, अपना नाम कमाया है। इसके वजह से इंडियन अमेरिकन पॉपुलेशन किसी से हिसाब करवानी है, नहीं करेंगे इस तरीके लोग आके खड़ा कर दे रहा तो आया क्या हुआ? हाँ अमिताभ जी, हाँ जी, अमिताभ कोई प्रॉब्लम है? हाँ कुछ प्रॉब्लम तो आ रहा है, आवाज ही नहीं आ रही थी आप लोगों की। अब अमृता जी नहीं बोल, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, तो अभी हमने अमृता जी के कन्वर्सेशन के स्पीच के बाद कुछ सवाल कन्वर्सेशन को जारी रखने के लिए मैंने सोचा कि कुछ बातें कहूं। तो पहला मैंने ये कहा कि बड़े कम संख्या में हम लोग हैं। हम लोग मतलब हम इंडियन अमेरिकन हैं, बहुत ही कम संख्या में। मेरा ख्याल है कि पता नहीं कितने मिलियंस होंगे, लेकिन कम ही होंगे, 3-4 मिलियन होंगे इंडियन अमेरिकन। और उसमें भी थोड़ा ब्रेकअप जानना चाहते थे कि ये जो इंडियन अमेरिकन हैं, ज्यादातर इसमें वो लोग हैं जैसे अमृता है, इनका जन्म हिंदुस्तान में हुआ और 20 बरस से या 22 बरस से वो अमेरिका में है। ऐसे लोग ज्यादा हैं, या अमेरिका में जो जन्म हुआ है और वो जैसे कमला हैरिस है, वो भी तो इंडियन अमेरिकन ही कहलाती हैं। तो वैसे लोग ज्यादा हैं। एक तो ये सवाल जानना चाहता हूँ। और ये जो इलेक्टोरल जो इन्फ्लुएंस है इंडियन अमेरिकन का अमेरिका में, ये कितना मैटर करता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में किसी को जिताने में या हराने में? इनका नंबर इतना कम है
कि इनको तो शायद इग्नोर भी किया जा सकता है, तो फिर क्यों ये रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों ही इनके पीछे लगे रहते। अभी हाल में मैंने सुना कि बाइडेन ने बहुत तारीफ की, बहुत ही तारीफ की। एक जो उनके स्पीच राइटर हैं उनके बारे में कहा कि सब तो आप लोग हिंदुस्तानी ही हैं, बड़े इनक्रेडिबल हैं लोग, आप लोग। बहुत तारीफ की उनकी। एक नासा से जुड़े हुए हिंदुस्तानी हैं, बहुत अच्छा नाम हुआ है उनका। तो इतना मैं ये पूछता हूँ कि इतनी कम संख्या वाले इन्फ्लुएंस कर पाते हैं वहां अमेरिका के इलेक्शन को, बात ही नहीं है। मम्मी और यही भाई मैं ने जानना करा था उसको। ये तो वो तो अपना नगर निगम काम करके चलता बनता हो। Are you मेरा सवाल asking? खत्म हो। मेरा सवाल स्पीकर से है। So there are about 5 million Americans, Indian Americans in the United States, and out of that, there are 5 congressmen who are of Indian origin. So that's not sufficient representation in my mind, and so more people need to represent. So there are no senators of Indian origin. So यही है, it's underrepresented. नहीं, हमारा तो सवाल उल्टा है। हमारा तो सोचते हैं कि हाउ डज हाउ डू हाउ व्हाई सो मच ऑफ interest is taken by both parties, Republicans and Democrats, in the Indian Americans when they are such a small number? That's my question. No, Papa. I don't have a definite or a rather educated answer on this. Why they are interested? I'm not sure. They are very. That may be a perception also. So and also Kamala Harris is not known as an Indian American. She is known as a Black American. She identifies as Black. I don't think she ever speaks out loud about her Indian origin as much. So yeah, I don't have an answer, but I can. Okay. हाँ, लेकिन इसमें प्रसाद साहब, इसमें एक ये हरगोविंद खुराना साहब ने एक अपनी स्टोरी लिखी थी। उसमें लिखा था कि जब हमने यहाँ पर कहा कि मैं एक ये जीन्स पर खोज करने जा रहा हूँ, तो और यहाँ के लोगों से, यहाँ के गवर्नमेंट से सबसे सपोर्ट मांगा, इन लोगों ने उतना सपोर्ट नहीं किया। Then he told that I took I asked money from my friends and relatives, and when I collected that, and after that getting sufficient money, तो हम वहाँ पे यूएसए गए, और यूएसए जाने के बाद में I invented that टेलीपैथी का सिस्टम। और जीन्स का, जब मदर के बेली में बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स बोलते हैं कि किस तरह से हम ये लड़का कैसा बनेगा, वाइट या मतलब ब्लैक कंप्लेक्शन या कितने हाइट का, और क्या बनना चाहेगा, अकाउंटेंट बनेगा या डॉक्टर बनेगा। और 90% केस में ऊपर से ऑपरेशन से ये लड़के वैसे ही निकलते हैं। दूसरा उन्होंने बनाया कि आप बेटी अमेरिका में है, आप यहाँ पर हैं, तो कोई मैसेज बेटी को देना है तो आप पर ऑपरेशन करने से ऑटोमेटिक बेटी समझ जाएगी। ये दो बहुत बड़ा उन्होंने खोज किया जिससे उनको नोबेल प्राइज मिला। तो अमेरिका के लोग जब यहाँ से जब चले गए तो अमेरिका के लोगों ने उनको बहुत सपोर्ट किया और उनके इन्वेंटिंग दिमाग को सपोर्ट करके और उनको आविष्कार करने दिया। उन्होंने आविष्कार किया, उन्हें नोबेल प्राइज मिला। Then in every newspaper of India it was written that Indian scientist got the Nobel Prize. So he wrote clearly that don't accuse me by telling me that Indian scientist got the Nobel Prize. मैं वहां रहता तो मुझे भीख मांगना पड़ता। मैं इन्वेंशन करना चाहता था, लोगों से कहता था, कोई सपोर्ट नहीं करता था, मेरी हंसी उड़ाता था। और जब मैं यूएसए आया, यूएसए ने हमको सपोर्ट किया,
नाउ आई एम यूएसए सिटीजन, और हमको इतना सपोर्ट किया, और इसकी वजह से मैंने ये कहा, एंड डोंट हमको अब ये बोल के गाली मत दो कि इंडियन साइंटिस्ट गॉट द प्राइज। एंड जब ये लोग रिप्रेजेंटेटिव मिलने गए थे, तो दैट लेडी टोल्ड दैट ओके इफ आई इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू डॉक्टर खुराना, आई फियर आई मे लूज माय सर्विस। तो इतना ज्यादा उनको मतलब यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के नहीं सपोर्ट करने की वजह से इतना ज्यादा मन में इरिटेशन था। पता नहीं यहाँ पे लोग लेग पुलिंग और डायनामिज्म को बढ़ावा नहीं देते हैं। हम लोग कोई बढ़ता है तो उससे जलते हैं, उसके लेग पुलिंग करते हैं, और वहां पर उनको सपोर्ट मिला। तो आपने कहा कि और क्या कारण है कि वहां के लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन वहां पर है कि लोग टैलेंट को देख लेते हैं और टैलेंट देख करके उसको सपोर्ट करते हैं। हम अभी 2-3 विदेशी कंट्री में गए और वहां पे हमने कभी किसी को लड़ते नहीं देखा। यहाँ घर में इंडियन हस्बैंड वाइफ एक साथ नहीं रह पाते हैं। तो और यहाँ पे कुछ बहुत मुश्किल से जो अपना बहुत अच्छा भाग्य लेके आया है, वो लड़ते लड़ते अपना कुछ अचीवमेंट कर लेता है और कुछ ऊंचाई तक उठ जाता है। ये नंगा सत्य है। और यूएसए के लोग टैलेंट को पहचान के, इवन इन पाकिस्तानी लोगों में भी जो टैलेंट, दुनिया का सबसे गंदा देश है और सब लोग उससे घृणा करते हैं, लेकिन इसको उसमें भी जो टैलेंट है उसको भी मैंने देखा कि बाहर में लोग उसको थोड़ा सा मतलब उतना घृणा से नहीं देखते हैं। तो हमारे ख्याल से इसके बारे में भी अमृता मैम बताएंगी कि आखिर मतलब मेरे हिसाब से तो टैलेंट को पहचान करके यूएसए को आगे बढ़ाने का व्यू यूएसए के लोगों में है, जो इंडिया में नहीं है। इस संबंध में क्या बोलेंगे हमारे, हाँ हमारे इस संबंध में हम अपने तीनों मतलब विद्वान, जैसे अमृता अधिकारी हुई, राजीव अधिकारी हुए, दिलीप सिन्हा हुए और ये राम मोहन जी हुए, ये सभी विद्वानों से पूछना चाहेंगे कि क्या ये सच है और क्या हम बहुत अच्छा प्रोग्रेस यहाँ पे नहीं कर सकते। जैसे हमने बताया, मेरे भैया ने इंडस वैली स्क्रिप्ट को पढ़ लिया और केवल अपना नाम खरीदने के लिए भैया को फूड पॉइजनिंग कर दिया गया, वो उनकी डेथ हो गई। गोरखनाथ का हमने अभी देखा, हमने गोरखनाथ को मतलब लास्ट में वहां पर मतलब हॉस्पिटल से निकाल के नीचे फेंक दिया था। मतलब इतना दयनीय दशा हमारे विद्वानों की, हमारे स्कॉलर की। यही सब चीज डिस्कस करने के लिए तो मेरा वेबिनार है। और इतना दर्दनाक मौत, और वहां पर हमारे टैलेंट को लोग आइडेंटिफाई करते हैं, हमें इज्जत देते हैं। कई बार हमारे एमडी ने, हमारे डीजी ने कहा कि अरे मीटिंग मुझे हटाने के लिए हो रहा था, और उसमें जब प्रश्न उत्तर होने लगा तो उसमें हमने जब जवाब देना शुरू किया सब लोगों के सामने, कोई उनके बातों का जवाब नहीं दे रहा था। ही टोल्ड दैट कि यू आर अमिताभ, यू आर अमिताभ। अरे सर, तुम्हारे संबंध में ये लोग क्या क्या बोल रहा था। और उस दिन निकाल दिया कि कोई भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट मिस्टर अमिताभ प्रसाद के दिखाए बिना, उनके सिग्नेचर के बिना हम नहीं देखेंगे। तो वो एकदम नेगेटिव फिगर डाल देते हैं। घोड़ा को गधा, गधा को घोड़ा मतलब बना करके, और वहां पे देखते हैं, विदेश में देखते हैं तो बहुत ऑनर देते हैं, कोई ऐसा ईर्ष्या नहीं है। हर समय निगेटिव बात, हर समय निगेटिव बात। हम तो बहुत अगुता गए, मतलब बहुत ऊब गए थे। लेकिन यूएसए में और बाहर में मैंने देखा कि थोड़े थोड़े टैलेंट का, थाईलैंड में हमको बेस्ट 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 ये मतलब स्पीकर का ऑनर मिला हमको, मतलब वैलिडिक्शन स्पीच में भाग लेने को कहा गया। और यहाँ आने के बाद क्या अमिताभ प्रसाद जी ने मैनेजमेंट को धोखा दिया है और उन्होंने चीफ मिनिस्टर का सिग्नेचर नहीं लिया है। और इन लोगों की छाती उस समय ठंडी हुई जब वहां जाकर के चीफ मिनिस्टर हाउस में देखा और कुमार का उसमें स्टैंप लगा हुआ था, अनुमोदित। तब इनका कलेजा शांत हुआ। तब दूसरे दूसरे ब्रेन में लग गए कि ये लड़का तो बहुत उन्नति कर रहा है, इसके पैर को काटो।
ये दोनों के मतलब कल्चर में हम ये डिफरेंस बहुत देखा है हमने। और विदेशों में थोड़े थोड़े टैलेंट को महत्व देते हैं और बोलते हैं अच्छा बोलो बोलो बोलो, और इसके बाद बोलते हैं, अच्छा आप चुप हो जाइए, आप चुप हो जाइए, आप बहुत बोल लिया, आप बोल लिया, आप चुप रहिए। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है और भारत के अच्छे अच्छे टैलेंट इससे दब जाते हैं। बहुत हमने अच्छी बात आपने हम तो कही, हमेशा बहुत अच्छी बात। हमने हम एकदम सच बात को एकदम खुलेआम बोलते हैं, चाहे उसका परिणाम जो भी हो। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक बात है आप। मैं हाँ अभी जो आपकी अनुमति से मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ, आप जी अगर सर, जी कहें सर। तो। हाँ सर, राम मोहन जी हैं और दिलीप जी हैं, वो दोनों इस विषय पर जरूर कुछ बोलना चाहेंगे। मेरा निवेदन है कि राम मोहन जी पहले कुछ बोलें। हाँ। ये लोग फैक्ट बताते हैं। काल शेट्टी साहब भी आ गए हैं पूना से। काल शेट्टी साहब को बहुत बहुत प्रणाम। काल शेट्टी साहब बहुत बहुत प्रणाम, वेलकम पूना के। नमस्ते। नमस्ते सर, बहुत अच्छा लगा आप मतलब पूना से हमारे नमस्ते, मैं इसमें पहले से हाँ, आपका आपका आपके आने से हम लोग का उत्साह पहले बढ़ से जाता हूँ। है। अच्छा अच्छा सेशन हो हाँ गया। हाँ, बहुत अच्छा सेशन हो गया आज। इतने अच्छे अच्छे विद्वान लोग बहुत कम जुटते हैं। बहुत चार चार पांच पांच स्कॉलर्स हैं आज। दो हमारे एम्बेसडर हैं, दो अमेरिकन सिटीजन हैं, तीन अमेरिकन सिटीजन हैं। सबको बहुत अच्छा चर्चा हो रहा है। तो और काल शेट्टी साहब के बारे में बता दें, ये यशदा पुणे ट्रेनिंग सेंटर में डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं और सीनियर आईएएस हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत। तो आते हैं, हम लोग का उत्साह बढ़ाते हैं। तो अब दिलीप साहब, ये राम मोहन साहब, जैसा कि प्रसाद साहब ने कहा, और इस संबंध में कुछ बोल रहे हैं आवाज आ प्रसाद रही है साहब। मेरी? ये हाँ आ रही है। हाँ, वेरी गुड हाँ, वेरी गुड। आपको मैं देख अभी के तो मन खुश हो गया। जो अमृता बोली है वो तो हम सच सच बोली है, और इसमें मुझे कुछ ना ऐड करना है ना कुछ सब्ट्रैक्ट करना हम्म है। पॉपुलेशन जो है अमेरिका में करीब 4 मिलियन से थोड़ा ज्यादा है। हम्म इलीगल्स भी करीब है 500,000। विश्वास नहीं होता होगा, लेकिन इंडियन स्टैटिस्टिक्स में करीब 5 लाख लोग इलीगल हैं अमेरिका में, इंडिया के। जो धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि वो लोग बहुत सारा ट्रिक्स एंड मेथड्स है जो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाते हैं इलीगल भी लीगल। वैल्यू ऑफ सोसाइटी में इंडिया जो है इस अबाउट 10%। Indians are reaching around 10% of the population. 10% of the population is a major chunk of the society. ये जो किसी ने कहा कि इंडियन बहुत कम नंबर में है, अनरियलिस्टिक है, क्योंकि इंडियंस जो है तो बेटर टू डू मोर टू वोट है। इसलिए इंडियंस की बहुत वैल्यू है, स्पेशली पिछले 10 साल में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसके लिए दो चीज रिस्पॉन्सिबल है। जो मोस्टली जो यहाँ से इंडियंस गए हैं वो एजुकेटेड हैं और एंटरप्राइजिंग है। दैट मीन्स दे वांट टू डू समथिंग। पहले बहुत लोग जाते थे अमेरिका यहाँ से कि यहाँ कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमको रिसोर्स है, अच्छे अपर मिडिल क्लास के हैं, अपर क्लास के हैं, पैसा है तो चलो अमेरिका में पढ़ लें। अब जो हो गया है इंडिया में, यहाँ जो सक्सीड करते हैं या सक्सीड करने वाले बच्चे हैं, दे आर गोइंग टू अमेरिका, जो क्रेम ऑफ द सोसाइटी कहा जाता है। Any cream which reaches somewhere is valued. The Indian diaspora का value in America is much more than सिर्फ
2 वहां पर पॉपुलेशन और एयरपोर्ट से हिंदुस्तान को अलग ऑडियो प्रॉब्लम। ये सब प्रॉब्लम जो तो जूम हुआ, जूम में बहुत प्रॉब्लम होता है। हाँ, this is a free version of Zoom. I thought it will be a for क्योंकि 40 minutes में end कर रहा है। Value of India has increased. अभी आ रही है आवाज everywhere. If it could be, if it can increase in our own area, you can imagine that it has increased much more in countries which are liberal like America. कनाडा में हिंदुस्तानी लोग तो बहुत, इंडियन लोग तो बहुत दंगल किए हुए हैं, बहुत बदमाशी किए हुए हैं, बहुत लोअर क्लास ऑफ सोसाइटी गया है कनाडा। वहां पर इंडियंस का न्यूसेंस वैल्यू बहुत ज्यादा है। इस बात पर हम खालिस्तानी मूवमेंट के बारे में भी कहेंगे। खालिस्तानी मूवमेंट में करीब 60% of the Khalistanis which are living in Canada are not above 7th class pass. निप्पड़ गवार लोग पहुंच गए कनाडा में। In contrast, Indians in America have the best or the highest education level among all the societies except the Jews. तो इंडियंस का वैल्यू बहुत है अमेरिका में, and they are doing well and they are doing better. The present government has brought Indian diaspora into focus of local politics in America, and Indians are not taking advantage, not misutilizing it. They are utilizing it, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, and they want to do better, and they are also helping other Indians to do better and to come and settle in the US with good credentials. जैसे बहुत देशों से इमिग्रेशन होता है अमेरिका में, हर तरह के लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन इंडियंस जो है 95% लोग जो हैं वेल एजुकेटेड, टेक्निकली और प्रोफेशनली प्रोफेशन, दे आर डूइंग वेल एंड आई थिंक दे विल डू बेटर। अभी 4 मिलियन के करीब है, 4.5, it may increase to 5.5 to 6, but there is a sociological limit. The American mentality जो है, American deep state के हिसाब से, they will never let Indian population increase in America more than 6 million. अब deep state का concept जो है, on some other occasion, but Indians are doing very well and they will rise in stature in America. Not very, they will be one of the most elite societies in the West or in America, while the American society is going down slightly. I'm talking about the average, whether in income, in education, or efficiency, or labor, that effort of labor. इतना ही कहना था, जो पॉइंट्स डिस्कस हुआ था उसके बारे में। आप लोग अब ज्यादा जानते हैं, बताइए। दिलीप साहब, I don't think Dilip Bhaiya is here. दिलीप सर, दिलीप सिन्हा जी, I don't think he's here. he was there, he phoned. Yeah, but ये जो लॉग आउट हो गया ना 40 मिनट्स में Zoom, maybe अच्छा, ओके रीजॉइन करना पड़ा, आई थिंक some people rejoin the meeting, उसके बीच में गैप हो जाता है। This is that version where 40 minutes में क्लोज हो जाता है ये Zoom कॉल।
तो दोबारा अगर क्लोज हो जाएगा अमिताभ जी, दोबारा अगर क्लोज हो जाएगा 2 मिनट के बाद फिर चालू कर देना पड़ेगा। करिएगा, देखिए अगर हो गया तो अच्छा ही है। अब थोड़ा अनुभव हुआ इसका, तो आगे से हम लोग ख्याल रखेंगे। जूम का नहीं करना चाहिए, जूम बहुत खराब है। हाँ, लेकिन अब ये बहुत नहीं, जूम देखिए सब लोगों का अगर इक्वल अच्छा कनेक्शन हो, 100 Mbps मिनिमम हो, तब जूम ठीक है। क्योंकि पॉलिटिकली हम लोग भी जो अपना डिस्कशन करते हैं जूम से ही करते हैं अमंग कलीग्स, लेकिन सबका इक्वल हो, सब फोन पर नहीं करते हैं, सब लोग कंप्यूटर पर बैठ के अपना माइक और ये सब लगा के बात करते हैं। यहाँ तो पर कैसे मोस्टली ऐसे 40 मिनट्स लिमिट तो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं मोबाइल फोन से, इसके लिए गूगल मीट बेटर है। अच्छा ये बताइए, ये Google Meet is free. ये Zoom is a paid one. So I did not know that we will have this 40 minutes. 40 minutes का जो slot होता है हम लोग का तो वो continuous जाता है, इसलिए I was not aware. 40 चलिए मिनट कोई बात नहीं, how अभी much you 40 pay to मिनट्स Zoom. में जल्दी हम लोग जो भी अच्छा थोड़ा आप बहुत लोग नहीं जानते होंगे, तो वहाँ जो दो एरियाज में काफी कंट्रोवर्सी है। अफर्मेटिव एक्शन जो है यूनिवर्सिटी एडमिशंस का, उसके बारे में थोड़ा और लोगों को बता दीजिए। थोड़ा बहुत तो आपसे मैं जान चुका हूँ, लेकिन इट वुड बी क्वाइट इंटरेस्ट। एंड द सेकंड पार्ट इज जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है अबाउट रिप्रोडक्टिव फ्रीडम ऑफ वेमेन, उसके बारे में थोड़ी जानकारी लोगों को बता दें तो उस पर कुछ बातें हो सकती हैं। पहला तो मेरा सवाल यही है कि मेरा भी सवाल उसमें यही है कि ये जो सुनते हैं कि आप सभी स्टेट्स में एक लॉ नहीं है, तो लोग दूसरे स्टेट में जाकर के they are able to circumvent the law। ये कितना ये कुछ अजीब सा लगता है। कंट्री इज वन but you can circumvent the federal law or whatever Supreme Court law by making use of the It is not a matter of, if I may answer. So Roe v. Wade करके एक law था which was overthrown by the Supreme Court. Roe v. Wade was a case that guaranteed reproductive freedom for a woman to have abortion, and it was federally secured. With the Republicans coming in, and now that our Supreme Court has more Republican or conservative justices than liberal, in an attempt to make it more of a Christian state, in my opinion, where abortion is considered a sin. That's Islamic law. That is Sharia. The American conservatives follow the Sharia laws. I'm sure they won't like it if you told them that. Oh, they don't like it. It is discussed among diplomats. Even to American diplomats have said that you follow a Christian Sharia law. Correct. So right now it is such that what the Supreme Court actually did was said that we don't want to federally mandate it. It is up to each state to make their own laws on reproductive rights. So the liberal states, say for example California, New York, Connecticut, these are liberal states. We call them more progressive states. There is more equality in these states, and these states kept the law that a woman has a right to have an abortion until say 16 weeks or 20 weeks, etc. But the states that are in the south, that are the conservative, very evangelical Christian states, where abortion is considered a sin, there, like Texas, Alabama, the states in the south of the US, they decided that 6 weeks is the limit where a woman, if the pregnancy is past 6 weeks, then the woman cannot have an abortion
no matter what, no exceptions. And the doctor who will perform in the case will be sued. So now Texas has a 6 week ban. So most women don't know that they are pregnant by 6 weeks. So that means potentially that if there is a case of rape, incest, whatever, or a child being pregnant, then she cannot seek abortion. Now the people who are rich, like the wealthier people, can go to another state easily and seek abortion and circumvent, like you said. But the poorest of poor will have to suffer the काम में किसी मजदूर मिस्त्री बुलाना ही नहीं है, पहले उसको पैसा देती है जगह। क्या पूरा बंद हो जा रहा है लैपटॉप? वो टाइम होता है ना इनका। क्या मतलब? पूरा लैपटॉप भी बंद हो रहा है, ये उसका टाइम फ्री वाले में कर रहे हैं। वाले में कर रहे हैं 40 मिनट बाद। अच्छा, रिकॉर्डिंग चल रही है, हम लोग जो बोलना होगी तो। Zoom, we don't use Google at all US में। तो यहाँ पे तो काफी प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। जूम जूम ठीक नहीं है ये, हम लोग क्या उसके लिए। हाँ, you have to get a paid version। हाँ, अब जल्दी जल्दी से और सारी बातें कर लिए जाए, बिकॉज अगेन दिलीप साहब से मैंने रिक्वेस्ट किया है, दिलीप साहब माइट हैव कम नो। दिलीप जी आ गए क्या? जी जी है, लेकिन ये कब तक रहेगा ये कोई ठिकाना नहीं है ना। ये जूम वही लिंक है ना। जी तो ये कभी भी हो सकता है। हाँ, तो सर इसमें आप क्या ऐड करना चाहेंगे? कुछ ऐड करिए आप भी। प्रसाद साहब जी कर सकते हैं, लेकिन वही तो बहुत लोग निकल गए हैं ना, बहुत तो चले गए निकल हैं। गए। कुछ लोग निकल गए। ये आज जूम चूज करके अच्छा नहीं हुआ, लेकिन क्या करें अब। आपको कोई आइडिया नहीं था कि जूम में 40 मिनट का ही होता है, उसके बाद वो फिर जूम अपना बिल तैयार कर लेता है। तो हम लोग सब गूगल मीट यूज करते हैं, गूगल में कुछ देयर इज नो लिमिट ऑन गूगल मीट। गूगल में बहुत अच्छा, लेकिन उतना यूजर फ्रेंडली नहीं होता है। उसमें उतने फीचर्स नहीं है जो जूम में है। तो सर आप क्या इसमें ऐड करेंगे? इसमें ऐड करने के खास कुछ नहीं है, since it's been a very comprehensive presentation that you have made, Amrita, very well covered and representing the issues involved both for the Indian community there and the general problems that Americans face. And when you all represent the first generation of Indians, well, you are. There are many Indians who are now second generation Indians, or perhaps even third generation Indians in the US. And I think other than the old Indians who had gone in the 19th century to Mauritius and Guyana and Suriname and Fiji, the Indians in the US have been the most successful in the sense that they have increased their own well-being, added to the country where they have which they have migrated to, and above all, started participating in the politics of that country. You mentioned that you are participating at the grassroots level. That is something that we had not been aware of, and I'm glad that you told us about the participation and the activities that are taking place there. We are only familiar with the Indians who are there at the national level, the Vivek Ramaswamy, the Kamala Harris, and the other lady, this Randhawa. So
we are familiar with those. But what is extremely important, what is relevant to us here is the participation in grassroots politics, which is very important because that is the main strength of democracy in the US and also in some of the other Western countries, where at the level of the common people there is participation and there is a feeling that you control your own destiny. That unfortunately is not happening in India. We have introduced Panchayati Raj, we have local self-government, but that is essentially uh, uh, under the control of the bigger powers, the party leaders. We have had, for example, we have a federal structure, we have states, and we have the center, whose powers are defined. And now the powers of the Panchayati Raj have also been defined. But you know, from the real situation here is that each political party is controlled by one or two people, and they nominate the candidates all across the country. So the lower level politicians or lower level political activists have to constantly return to Delhi for instructions, for advice, for funds. So it's a huge problem in our country that our federalism and our local self-government does not operate as effectively as it should, and as it does in the US. In Switzerland, the canton decides who will get nationality of Switzerland, because unless a canton sponsors a foreigner, he cannot they cannot take so they cannot get Swiss nationality. So you have to apply to the canton, and the canton then sponsors, and then the federal government accepts. That's the kind of power that the cantons have over there. And the canton is a district. Many cantons are smaller than a district in India. The US, fortunately, is holding on to it. And then, of course, you have drawn attention to the huge, all the problems, the treatment of minorities, climate change, the social media, uh, the the problems of, especially the social media, the problem that social media has created for democracies all over the world. Because नहीं फिर आ जाएगा, अभी लग जाइए, आ जाइए, आ जाइए. somehow I feel that there is talk of all democracies being in trouble today. There's a problem in India, problem in UK, problem in Israel, problem in America. Now, I think this is the dilemma of democracy, that now we have a very high level of popular participation in democracy, a huge level of political activism. And the fact that there is such wide level participation is creating chaos. Because earlier you had participation was essentially people remained in the background. They elected leaders and then they went off to sleep. But that's not happening now. Whether in India or elsewhere, everybody has an opinion to express, and every opinion is being expressed. Yeah. And there are people who are taking to the streets to enforce their rights. This happened in the West earlier also, but never on such a scale. And you had, for example, the anti-Vietnam movement. You had the French hippie movement. So there were movements, but they were confined to specific issues. Now it is becoming much more widespread. In India, of course, we have a different set of problems that we are dealing with over here because of the issues that we have with party politics in India. But we still do not have the kind of participation that you all are fortunate to have in the US, and particularly the way the Indians have taken to politics like fish to water. So compliments to you, and I suppose good luck to all the Indians there. I hope Trump picks some Indian as his running mate. He has a choice of two. I wonder that will be a good thing or a bad thing for the Indian community in the US. I don't believe Kamala Harris has done very much for them. But nevertheless, the Indian community itself is quite strong, quite independent, and able to hold its own. It doesn't require anybody's props to stay on there. So it is compliments to you, and wish you all the best in your. Thank you, Bhaiya.
Thank you. Amitabh ji, back हाँ to जी, you. बहुत अच्छा लगा. इट्स अ वेरी नाइस discussion. लेकिन due to Zoom, we have been disturbed for Yes. some moment. No? But okay, the beauty of this webinar is means has been enhanced by this our great scholars. No, and this was a very grand meeting. और बहुत सारे लोग आते, यदि गूगल वाला होता. बहुत लोग इसमें नहीं आ पाए. तो ठीक है, लेकिन फिर हम लोग एक बार, आप जब अमेरिका में रहेंगे तो अमेरिका से एक और करवाएंगे, जिसमें हमारे अब तो वेबिनार में 60-70 लोग आते हैं और बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ. और अच्छा, ये अभी हमने सब्सक्राइब हाँ कर दिया है 1 महीने के लिए. तो देखिए, हाँ मेरा ख्याल है कि अभी तो अनलिमिटेड होगा. अभी मेरा ख्याल है अभी तुरंत किया है. हाँ, तो अच्छा कभी अच्छा. चलने दीजिए जब तक हम लोगों को जब तक हम लोग को डिसमिस नहीं कर देता है गूगल. हाँ, गूगल नहीं, जूम, अनलेस वी आर रूम्ड आउट. तो अब तो राममोहन जी को सुन चंद्रेश्वर. करके बड़ा अच्छा लगा. हाँ, बहुत ही एकदम क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलता है इनसे. लेटेस्ट जो पोजीशन है, अभी तुरंत वापस आ रहे हैं अमेरिका से. तो बहुत सारी और भी बातें हैं जो मैं केवल बात को आगे बढ़ाने के लिए पूछ रहा हूँ, कह रहा हूँ. अभी इस बार पिछले इलेक्शन में तो ऐसा लगा कि पिछले 2020 के इलेक्शन में बहुत बहुत परिश्रम किया मोदी जी ने वहां जाकर के. अब की बार डोनाल्ड ट्रम्प, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प तो जीत नहीं पाए और हार गए. उसकी वजह वो जो सुनने में क्यों आई नहीं आ है, रहे हैं? क्यों नहीं आ रहे? उसकी वजह सुनने में आई कि वहाँ के लोग जो डेमोक्रेट्स हैं, वो उन पर प्रभाव नहीं पड़ता है. मतलब वो हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स से बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं. खास करके वो तो जो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर मोदी, उसके प्रति उनकी भावना इतनी विपरीत है कि उनके इलेक्शन के एफर्ट का, कैंपेन का उल्टा ही प्रभाव पड़ा. तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि अमेरिका के जो इंडियन अमेरिकन्स हैं, उनको यूएस इंडियन रिलेशन से कोई खास मतलब नहीं है. क्या यह बात मानी जा सकती है? राममोहन जी से पूछ रहा हूं. उनको दिलचस्पी नहीं है कि हिंदुस्तान या यूएस का जो पॉलिटिकल रिलेशनशिप कैसा भी हो, इट्स इमैटेरियल टू दैट. हम लोग समझते हैं कि इट इज मटेरियल, लेकिन वहां के लोग नहीं समझते हैं कि इट इज मटेरियल. इज दैट राइट? योर व्यू, सर? My view is that for America, India is just another country doing better than many others. It's not an enemy of America. That's all. For Very India, nice. Americans are like God. It's across the border, all the goods of the world and of the universe exist there. So there is a difference in concept. Americans don't really bother about India except when it comes to a little bit of getting some votes here or there, or getting their factories run better with more skilled labor. Apart from that, India is of no concern to the basic American deep state. They are much more concerned with China and Russia, Europe, Australia, and the Pacific, and Korea, and all that. In that order, the importance of India is the last. America is more interested in its policy towards North Korea, Russia, China, the Middle East. Then comes a middle
an inconsequential country like India, because India cannot affect the politics of America, while the Christian or the church dominates American politics very strongly among the Republicans and mildly among the Democrats also. The deep state, as we generally discuss among diplomats and foreigners or people who have idea about politics internationally, the deep state of America does not like India politically. It will not destroy India, but it will not take any steps to become closer to India, because they see India as a competitor now, and you can see the recent political happenings in India, which Americans have been helping Pannu, the Sikh separatist, and other uh, Indian out of the line people, the so-called leftists, to dig into Indian ribs. So the American politics is not bothered about India. They think that they can affect Indian politics, and they do sometimes. Indians don't think they will ever be able to convince Americans to look after him. India is not of any consequence compared to other countries that Americans are interested in. That is my view, which many people do not agree, but that is my view. सुने दिलीप सिन्हा साहब का व्यू. What do you think about the typical capitalistic mindset? Now, anyone, even in the village, if somebody becomes very rich, his attitude becomes different. And if he has to do the business or the rule, then all the more. Since America is a superpower, so for their own sovereignty kind of thing, because I have watched, the moment you have watched better, you know both the world, we do not know both the world, it could be at the feeling level. But one thing which earlier I was not liking, now I appreciate it. The moment somebody takes American citizenship, they become different, which is good. If I'm a citizen of some country, then I have to be pro that country. Yes. It's good for the individual, it's good for the nation. Now, I can't have truly the double thing. Earlier, जब भी हमारे मित्र हम तो जानते नहीं गए, जब आते थे जैसे बोलता था कि जो चंद्रेश्वर जी धूल बहुत है, आप नहीं सह पाते हैं, हमने कोई अमेरिकन को नहीं बोलता, तुम क्यों बोलते हो? तो अमेरिकन नहीं जो बोलता है उसके लिए थोड़ी दिन की बात है, ये तो धूल धक्कर को झेले हुआ था. So but this I know life, if I have accepted the citizenship of any country, I must be loyal to that. Very correct. Absolutely correct. मेरे ख्याल है हाल में there was a view expressed by some Indian Americans saying that my advice is that when you have become a citizen, then you don't think in terms of Indian Americans, you are Americans. ये एक अभी हाल में मैंने कहीं देखा इसको, senior Indian American was expressing his view very candidly about it. But anyway, एक और चीज मैं पूछता हूँ, मैं 2-3 बार गया हूँ, 2-3 बार कई बार गया हूँ, याद नहीं कितनी बार गया हूँ. ये अजीब सी बात है कि
अब हम इंडियन अमेरिकन्स वहाँ आपस में मिलते हैं जरूर, लेकिन वो उन्हीं लोगों से मिलते हैं जो नंबर 1 उनके धर्म के हो। मतलब हिंदू होना, हिंदू, अगर हिंदू, आई वुड से रादर उनका डेफिनेशन बदल रहा है, हिंदू अमेरिकन एंड मुस्लिम अमेरिकन काइंड ऑफ थिंग। तो ये अच्छी बात तो नहीं है, In लेकिन the long तब run and short run also it is very bad. हाँ, तो लेकिन ट्रेंड तो वही देखने को मिलता है, ट्रेंड तो वही देखने को मिलता है। अगर हिंदू, अगर मान लीजिए रिलीजन, अगर रिलीजन ही मेन है, उसके बाद लैंग्वेज है, तो इन चीजों को अक्रॉस रिलीजन तो कम्युनिकेशन है ही नहीं, करीब करीब ना के बराबर, नेग्लिजिबल है। So how do you respond to this? Is it because of inhibitions on the other side, or is it because of equal uh, amount of prejudices on both sides or multiple sides? What is it that holds bonhomie, camaraderie, Um, I friendship? I think there's camaraderie between I think you're talking about Hindus and Muslims. Not correct, Papa? Yes, I'm Yeah. hearing. So I think in the states, like I think in New York, California, may there's a wider mix of people, and I'm sure I'm not speaking for them, but I think there is not so much of a separation. I believe that when we meet people, when we go for parties or meetings where we have Indians, especially in my work, when I'm doing some campaign work or going door to door or grassroots, we have as many Hindus, Muslims, Christians, if you're talking about Indian Americans, who are talking to each other and meeting with each other. So I think it may be you may be thinking because of the group that you've met, perhaps have been mostly Hindus per se, but ऐसा नहीं है. Yes, of course, a small percentage of people will always be an exception. Correct. Yeah, and you are part of that small percentage of people, but then trend is like this, which is not really. But then I would like to I know think how is it? I think I have noticed the trend more in India than in the US. Especially from some many of my college classmates who are Muslims have started feeling alienated and they don't interact with us anymore because of some microaggressions. So I see that more when I visit India than I see it in, obviously, of course, we are a very small population in the US, but I see that more here than over there. Hmm. Yeah, yeah. But perhaps if it improves here, it will improve there too. Yeah, it seems like Perhaps it's going to improve here. if we if there is it is a reflection of the local prejudices here. 1900 पासपोर्ट वाला का लगा है Uh, और uh, 300 uh, उनसे पूछा दिलीप टिकट नहीं लगा जी 2269 से अब निवेदन है कि थोड़ा उनकी बातें भी सुने, 2500 मैडम दिए कुछ तो जरूर बात होगी। 2269 बता दिए हाँ 231 रुपये बचे Right, thanks. I just spoke. I spoke quite a bit on Amrita's excellent presentation. It was very good. और जहाँ तक ये सवाल है इंडियंस का, इंडियंस आर एसेंशियली मल्टीकल्चरल, लेकिन जहाँ पर बड़ा कम्युनिटी होता है इंडियंस का, वहाँ नेचुरली सब डिविजन्स शुरू हो जाते हैं. People from different states start meeting more amongst themselves, which is natural, which takes place in India also. But in places where the Indian community is very small, वहाँ पर वो distinction नहीं आता है.
because there the everybody stays together. But America में community is very strong. It's the largest Indian community abroad. So वहाँ पर it is possible that in the larger places there might be subdivisions. But I think Amrita has correctly pointed out that perhaps now what is happening in India today is creating certain misconceptions, apprehensions abroad, as they are in India also, about where we are headed. So that is something that we have to wait and see. On the issue of loyalty, जो चंद्रशेखर जी ने सवाल उठाया था, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस देश में हमारे लोग जाके नागरिक बनते हैं वो देश हमें कैसे देखता है। और इस मामले में अमेरिका बहुत ही ओपन सोसाइटी है, क्योंकि अमेरिका की एक नीति रही है कि विदेश नीति में वो अपने देश में आए हुए जो 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 इमिग्रेंट्स हैं उसको इस्तेमाल करता है उनके ओरिजिनल देश के साथ राजनीति को दृढ़ करने में। जैसे इंडियन ऑरिजिन के जो लोग हैं उनको इस्तेमाल करते हैं अमेरिकन कंपनीज भी और अमेरिकन गवर्नमेंट भी इंडिया के साथ डीलिंग करने में। यानी अमेरिकन को इतना विश्वास है इंडियंस के ऊपर कि ये हमारे हितों के खिलाफ नहीं जाएंगे। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्बत इंडियंस की लॉयल्टी के, कि उन पर विश्वास इतना है अमेरिकन गवर्नमेंट का कि इंडियन को अपॉइंट कर रहे हैं, इंडियन को भेज रहे हैं कि तुम जाके इंडिया से डील करके आओ। और बल्कि एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश की नीति बहुत संकीर्ण है, क्योंकि हम लोग ड्यूअल नेशनैलिटी नहीं परमिट करते हैं, जो कि मेरे विचार में गलत है। अगर कोई इंडियन चाहता है कि वो इंडियन रहे और अमेरिकन पासपोर्ट भी ले ले, अमेरिका तो अलाउ कर देगा मेरे ख्याल से, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट नहीं अलाउ करती, जो कि एक बहुत संकीर्ण नीति है। मेरे ख्याल से बहुत शॉर्ट साइटेड नीति भी है, क्योंकि हम लोग जब हमारा नागरिक बाहर जाके विदेशी नागरिकता ले लेता है तो वो प्योरली अमेरिकन हो जाता है। अगर वो इंडिया आके कोई क्राइम करता है इंडिया में तो इंडियन गवर्नमेंट उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती है, क्योंकि वो इंडियन नेशनल नहीं है, वो अमेरिकन नेशनल है और अमेरिकन गवर्नमेंट उसके लिए इंटरवीन करेगी। अगर उस नागरिक के पास इंडियन पासपोर्ट भी है तब हमारी सरकार के पास उतना ही अधिकार है उसके ऊपर जितना कि अमेरिकन सरकार का है। तो हमारी सुरक्षा वाले जो लोग हैं उनको समझ नहीं आती ये बात कि ड्यूअल नेशनैलिटी होने से हमें फायदा होता है बनिस्बत की नुकसान के, ज्यादा फायदा होता है, इसलिए हमें अलाउ करना चाहिए ड्यूअल नेशनैलिटी। और जहां तक इंडियंस का सवाल है कि वो कितना कंफर्टेबल फील करते हैं अमेरिका में, आप इसी बात से देख लीजिए कि रूस से हमारे संबंध बहुत पुराने हैं, बहुत दृढ़ हैं। बहुत लोग रूस की दोस्ती का हवाला देते हैं, लेकिन रूस में कुल मिला के 14,000 इंडियंस रहते हैं गिन चुन करके। चीन में पता नहीं कितने लोग, और वो भी उससे भी कम होंगे जो हैं, वह व्यापारी हैं, डरे रहते हैं वहां पर, पता नहीं कब जेल चले जाएंगे हम। अमेरिका में जो इंडियंस रहते हैं वो एक्टिवली पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहां पर डेमोन्स्ट्रेशन निकालते हैं, एजिटेशन करते हैं। यानी उनको इतना आत्मविश्वास है अपने ऊपर और अमेरिकन लीगल सिस्टम के ऊपर कि वो वहां पहुंच के जुलूस निकाल सकते हैं। अगर कोई विदेशी इंडिया में आकर जुलूस निकाले, विदेशी ऑरिजिन का आदमी इंडिया में जुलूस निकाले, तो हमारी सरकार पहले पहुंच जाएगी, सीबीआई ईडीआई वगैरह सब पहुंच जाएंगे वहां पर कि ये फॉरेनर, ये विदेशी लगता है। ये सोनिया गांधी को ही लेकर जब से इंडियन नागरिक कब से बनी हुई है, अभी भी लोग बोलते हैं कि इटालियन ओरिजिन की है वो। तो हमें अपने अपने वो था देखना पड़ेगा कि हमारी अपनी हमारा अपना जो आउटलुक है वो कैसा है, हम कैसे देखते हैं उन लोगों को जो इंडिया में आकर बसे हैं। जो अफ्रीका से लड़के आके यहाँ पढ़ाई करते हैं उनके साथ जो बर्ताव होता है हमारा, वो उनसे बात करिए तो आपको मालूम होगा कितना कैसा उनका बर्ताव होता है। तो अगर कहीं कहीं पर इंडियंस को अमेरिका में थोड़ा रेसिज्म फेस करना पड़ता है तो हमें याद रखना चाहिए कि इंडिया में भी उतना ही फेस करना पड़ता है जो विदेशी भारत के नागरिकता, ऐसे नागरिकता तो लेता ही नहीं है कोई यहाँ आकर के, गिने चुने लोग ही भारत की नागरिकता लेते हैं। लेकिन जो भी यहाँ आके रहते भी हैं वो जो 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 समस्याएं जो का सामना करना पड़ता है वो बड़ी गंभीर होती है। अच्छा, थोड़ा बहुत कहना था मुझे। अब ये टिपिकली सर हम लोग ने जो भारत से जो लोग जाते हैं या माइंडसेट को समझने के लिए हम लोग जब सिटीजन कैंप के हैं और किसी कारखाने में काम करते हैं और उस शहर में हम रहते भी हैं, तो कारखाने में हमारा व्यवहार जो है
वो एक तरह का है, और जब सोसाइटी में बैक होते हैं तो व्यवहार फिर दूसरा हो जाता है। तो सिमिलरली those who have gone to America and they would like to There continue has there. been a mild earthquake in New York. Oh, 4.8. The breaking news. breaking news. I would like to ask one question that 50 years ago, the attitude towards Gujarati of the Americans, and now, from a distance, I can feel that one point of the time, Guju was a Gali, but now the situation has changed because they have money power so much that they can have a dent on the entire kind of. What's your view on this? आवाज नहीं आ रही है अमृता आवाज जी। नहीं आ रही। अब So, Chandrasekhar ji, I have lived in Gujarat. हम गुजरात में पढ़े हुए हैं, वहाँ पे रहे हुए हैं, and I have never experienced that Gujarati or being a Guju as a Gali, actually, frankly. And it's not like I've not lived here. So I'm a little taken aback. Gujaratis are a very very ethically progressive kind of a people. हमारे गुजरात में जब हम पढ़ते थे वहाँ पे women were during Navratri and during festivals, women were out in the night at 11, 12, 1, 2 alone without a male person to take care of them. Unlike in Delhi where I worked, where I could not step out or after 8. So Gujarat, in my mind, was a pretty safe place, and people were looked upon with respect, especially. So I don't know if it was a Gali. Obviously, 50 years जो आप बोल रहे हैं मुझे पता नहीं. In America, Correct. earlier how they were treating with the Gujaratis, and now how they are treating, is there any difference or all the same? That's my point. I think it's the same. I think it's the same. Gujaratis are very respected in the US. They are a very wealthy community as far as they have these motels with that's another stereotype, but they are ethnocentric. They keep to themselves, but they are not and they are law abiding people. And I don't think कि जो Narendra Modi ji is a Gujarati is a factor that has made people think that Gujaratis are better now than they were before. That is what. I don't think people care or know that he is Gujarati. Thank you for your credit. I mean, your deeper knowledge. one more aspect on which Ram Mohan ji can. That is about the white population in America, their outlook towards India vis-a-vis Pakistan. Americans traditionally have preferred Pakistan over India. That is part of the partition of the country, which was done by the British, and the British attitudes were taken over by the Americans. Even now, there is a lot of soft feeling for Pakistan. They're scared of Pakistan also because the terrorism in Pakistan, which helped in the 9/11 bombings, is still there. And India, I think, to the Americans this time, the last 1 month, a couple of months that I spent in California, there is a sense of competition of the Americans with the Indians. They do not like people who can become better, or they can be a challenger to them in about 20 years or 30 years or 50 years. This is the attitude which I noticed
for the first time in America. And I was discussing it with some of my colleagues in America who live in America and those who are in the foreign service here. They detoured my idea. They said the Americans are intrinsically scared of Indians. Scared of Indians in a way that, or you can say it otherwise, that Indians can take an independent line with America. America doesn't want any country, a poor country, a third world country, or a upcoming country, to tell them anything or give them any complaints. Americans want everyone to follow them. Which now they feel that India is getting more strength, not only in the Nadella and the Google and the NASA strength, but generally politically they feel that India is becoming more and more important in the world, and it does not follow American directives on the dotted line, which is a bad sign for the American deep state. They do not like countries which do not obey them. That is my feeling. About Pakistan, I don't know why Americans are still pursuing them, because they want Pakistan in control, which they'll never have now when China is supporting Pakistan. But they are still trying, repairing their F-16s. That's all that I can say. Don't trust the Americans on their Indian attitude. It is very colorful and very nice on the outside, but intrinsically there is competition and there is danger of splitting apart. What do the Indian Americans expect from the US government? They are not interested. They expect that the American government will give them a nice time. They will not create problems. That's all. They are not interested in any, deep politics. They don't want to become the most powerful group and to lead in politics. They will join politics, like my niece has joined politics, but it is not to become an authoritarian person in that political world. Maybe her children or their grandchildren may think of participating in the political life of importance in America. But at the moment, the Indian Americans who are in politics or who play with politics are just for their own better general sense. They like the American attitudes on abortion or on right wing or church, on the hooliganism of the Republicans and the dehavu of the Democrats. They deal with that and they are happy about it. But politically, Americans, even our Indian Americans, will not delve too much. If they become too important, they will be sidelined. I think Nikki Haley and some of the other Indian of Indian origin have climbed to some pinnacle of success politically, and I think Vivek Ramaswamy and Haley and the others, and Ro Khanna, who's a congressman, they have ambitions, I'm sure. So we are seeing them rise more just in the public discourse. So I think they are ambitious to be in somewhere in some authority. Yeah, I think the Americans tolerate a lot. If they could tolerate Hussein as a president, they will be. Yes. They should have been ready to accept Vivek as a president. Hussein is Barack Obama. I'm talking about Hussein. Why doesn't he's called Hussein by his brothers and his family?
Why is But it that's called not Barack by my point. America? I mean, well, how does that matter? My son's called Rehan, It so it's doesn't like matter. nothing. That's what I said. It doesn't matter because Indians will not get into that challenge. Is No, the but You may have different opinion about Obama, but we must recognize that quality in America. I mean, one criticizes America no end, but the fact remains today. From every country, there are people wanting to migrate to America. From Russia, yes. from China, from Vietnam, from India. So everybody will take a US visa and go if America opens its visas to India. So America has attracted the best talents from all over the world, which is a little more than what other countries, any other country has come even 10% of that, I would say would be an achievement. Now, America has any number of problems, but this quality of America must be recognized and accepted by everybody. Today, if a person is posted to India, ओ प्रत्युष फिर चला गया वो बेटा जल्दी आओ आ जाओ जियो का समय उस पे क्लिक कर दीजिए उस और फिर यहाँ ओपन कर दीजिए और फिर म्यूट कर लीजिए अपने आप अभी स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ खुद ही जो होस्ट है वही बोलो हाथ बोलो एक मिनट आपको तो कछुए कहाँ थे और मैं कह रही है कि कछुए आवाज मत लगाइए और जल्दी से दोनों उठा दो पूरा नहीं वो तो कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग चल रही है ना